So good morning everyone. सभी को नमस्कार. चलिए आज जो किताब है उसको सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे. Don't lose your mind, lose your weight. How to eat. Relearn. Know the stomach. Okay. What do you know about our heart? We know that it is the size of our fist and it is located inside our chest, slightly to the left side. It provides blood to the entire body. Also, when we don't exercise or gain weight, our heart experiences stress. Fine, good enough. Now, how do we know about our lungs? That they are inside our ribs and smoking can harm them. And regular exercise can improve their health. They provide O2 to the body and throw out CO2. Great. Now, how do we know about our stomach? Do we know the size of our stomach, its location, what it does for us, what can harm it? Surprisingly, though our stomach is an involuntary organ, just like our heart and lungs, not too many of us seem to know much about our stomachs. We can guess that it is somewhere roughly between our chest and hips, that it is separated from the intestine, made up of the large and small intestine. The large is actually small and the small is large, almost 4,000 square meters in our area. So why do we pay so little attention to our stomach? It is because it never attacks us. We have all heard of heart attacks, but stomach attack? No, our stomach never seems to attack us. The word heart attack also is a misnomer. The heart is working for us for the time we are in our mother's womb. It is in fact one of the first organs that is developed, somewhere around 6th week of pregnancy. The heart that we owe our life to cannot possibly attack us, but we definitely attack it with our habits. Eating, lack of activity, and exercise. And then, like the case of Ulta Chor Kotwal ko Dante, we call it heart attack. I think we care so little about our stomachs and digestive system because any amount of abuse to it doesn't lead to our death. At the most of it's a week off from work. I know people whose stomachs are always crying out loud for attention with acidity, bloating, constipation, burps, farts, nausea. But they are just not bothered to listen to its signals. Antacids, salts, and laxatives have become a way of life for these people, almost a daily ritual. Heard the term stomach and insult. We actually share a very abusive relationship with our stomachs. We eat all the junk in the world and then go on a detox holiday. We come back from the detox holiday and get back to junk eating with a benignness. Or still, we go on crash diet consisting only of juices with guaranteed weight loss and then get all the weight.
back in 2 weeks flat. Some others let their body weight yo-yo as a way of life. Wedding, party, get thin over, get fat again. Why do we do this to ourselves? Do we really hate ourselves so much? On the surface, we do seem to care for ourselves. We wear good clothes, go for the manicure, get ourselves the best car and house that our money can buy, expect love and respect from our partners. But if we love ourselves so much, why do we abuse that integral part of our system which provides us with love and nourishment, our digestive system? If we want to get toned, muscular and popular, fit into that little back dress, have no stretch marks, or be bikini ready by 24/7, then we need to establish a good relationship with our stomach. One of mutual love and respect. Loading the stomach when it has no capacity to digest is criminal. It is a human right violation. Our lifestyle where we eat nothing until even and then start loading our stomachs for dinner are just wrong. It is like hiring people for 9 a.m. to 5 p.m. job and giving them little or no work till 5 p.m. and then just as they are about to leave from work, loading them with all the files and work in the world. You don't need me to tell you that these kind of bosses receive no love or respect for this from the staff. Not that such a boss love or respects the staff either. Such behavior just leads to loss of productivity, time, creativity, and basically loss of health of the organization. Extrapolate this to our eating habits as the sun goes down, so our digestion and assimilation ability, and we give our stomach no work and therefore no nourishment during the day. Its ability to digest food in highest between 7 a.m. to 10 a.m. And many of us give it chai, coffee, cigarette instead. Thus, we actually work at making our stomach dull and our digestive system enzymes weak. We barely grab our lunch and generally eat light till 5 p.m. After that, as the stomach starts winding down and wants to rest, we load it with bhel puri, sev puri, grilled sandwich, some more tea, coffee and cigarette. Later between 9:30 and 11:30 p.m. when the stomach is already tired and sick after the evening snack attack, we give it a heavy dinner of pasta or rice with sabji and chapati. And of course, our favorite dessert. Because dessert tastes best with dinner and we eat a lot for dinner because that is the only time the entire family eats together. That the center of attraction during dinner is our darling. TV is another story. And so our stomach takes this abuse and ill treatment day in, day out for years together. Then, if it calls out to us for help by bloating, farting, or burping, we think it is weak and not behaving well. And to suppress its cries or help, we use antacids and laxatives. Some go one step further and eat antacids and salt with their meals, thinking they are nipping the revolt at the pot. Smart advertising professionals have made some interesting ads encouraging this behavior. Remember the one where the son-in-law cannot eat beyond 4 or 5 laddus, which are
thrust upon him. Out comes the magic efforts vacant sword. Like a true hero, he gulped them down and readied his stomach for more onslaught. और ससुराल जाने का कोई टेंशन नहीं. Wow, this son-in-law is every mom-in-law's dream come true, because he doubles everything that she cooks for him. There have been times where during my meetings, my clients bought and I can write the entire diet, recall down myself. The board smells of samosa, curry, bhaji, everything. It is all just sitting there undigested for the world to smell. Some wise person rightly said, why fat and waste when you can bought and taste? If you eat at a time when there are hardly any digestive juices being secreted, when the stomach had lost its power of digestion, when there is no prana in the stomach, when the mind is distracted, how can you expect food to get digested properly? And instead of constant onslaught of antacids and laxatives, shouldn't you just learn to eat right at the right time? US bombarded Afghanistan and Iraq, which created much more damage than any good. After that, it wants to send aid to both these countries. No wonder the Afghanis, Iraqis, and Muslims world at large hates America. Make up your mind, America. Either stop bombing them or stop the aid. And chances are that once the bombing stops, they won't need the aid either. In the same way, if your overeating stops, you won't need any digestion aid. So आज के लिए इतना पढ़ेंगे, कल और आगे पढ़ेंगे. तो ओवर ईटिंग थ्रेशोल्ड, इसके बारे में आगे चर्चा करने के लिए हम हमारे साथ डॉक्टर साहब है, उनको बुलाते हैं. तो ओवर टू डॉक्टर रमेश मिश्रा. गुड मॉर्निंग सर. वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल. सबको मेरा नमस्कार. आज हम बहुत बढ़िया टॉपिक के ऊपर आ गए हैं. इसमें हमारा राइटर ने डिस्कस कर रहे हैं कैसे हमारा हार्ट जन्म से पहले हम जब मां का पेट में थे, यूट्रस में थे, तब से शुरू हो गया. ऐसा कि 5 सप्ताह जब हो गया लाइफ का, हम 5 वीक से हमारा हार्ट को लेके चल रहे हैं. ये हमारा साथ है तब से. 5 सप्ताह का मतलब कितना होता है? 1.5 महीना से भी कम, 1.5 महीना, इससे भी कम. तब से हमारा हार्ट छाती के अंदर, चेस्ट के अंदर थोड़ा लेफ्ट को रहता है, हरदम बीट करता है और हमारा शरीर को, पूरा शरीर को ब्लड सप्लाई देता है. हमारा वार्डिंग ऐसा है, जब इसका प्रॉब्लम हुआ तो अटैक हुआ, मतलब हार्ट अटैक का मतलब हार्ट अटैक क्या, लेकिन सही सेंस में हमने इसके ऊपर अटैक किए हैं. दूसरा भी है हमारा लंग्स जिसको बोलते हैं, वो हमारा वही रिब्स के पीछे एक
कोठरी है जिसको केज बोलते हैं, रिब्स का केज बोलते हैं, इसके अंदर लेफ्ट एंड राइट होके रखे हैं गए हैं। ये भी हमारा शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को, अंगारक अम्ल गैस जिसको बोलते हैं, इसको निकालते हैं। ये दो है ना, इसीलिए ये एक साथ में काम करते हैं। ये अंगारक अम्ल गैस, कार्बन डाइऑक्साइड अंग्रेजी में बोलते हैं, इसको निकाल कर ऑक्सीजन को भेजते हैं शरीर, पूरा शरीर में। O2 मतलब ऑक्सीजन, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। और तीसरा इम्पोर्टेंट है, इसका नाम है स्टोमक। ये स्टोमक फुसफुस और हार्ट का नीचे एक मसल का लेयर होता है, और इसके नीचे जो एरिया होता है इसको हम एब्डोमेन बोलते हैं। इसमें हमारा जो दो हिप बोन होते हैं, जंघास्थि, ये दो हिप बोन का एक कोठरी होता है। इसमें आधा वाला कोठरी सामने से कवर होता है मांसपेशियों से। ये जो एब्डोमेन होता है, इसमें ये साथियों को लेके स्टोमक, इसका साथ स्मॉल इंटेस्टिन और लार्ज इंटेस्टिन, ये 4000 स्क्वायर मीटर एरिया कवर करते हैं। तो इतना बड़ा इसके अंदर रखे हुए हैं। और ये जो स्टोमक है, इसका अटैक के बारे में कभी हम सोचे भी नहीं, कभी भी बोलते नहीं स्टोमक का अटैक हुआ। हार्ट का नुकसान हम करते हैं, खाना जो बुरे चीज खाते हैं इसके जरिए। फेफड़े का भी नुकसान करते हैं, सिगरेट स्मोकिंग बगैर कुछ करके। लेकिन स्टोमक के बारे में हमको मालूम नहीं, हम क्या नुकसान इसके लिए करते हैं। ये स्टोमक कभी ऑब्जेक्शन किया नहीं। हम कितने बजे खाए, कितने बजे खाना चाहिए। सुबह में जब हमारा शरीर काम करने के लिए तैयार है, तब हम सोते रहते हैं 7 से 9 10 बजे के बीच में। 7 से 10 बजे के बीच में वो स्टोमक तैयार होता है, तैयार रहता है ये अपना काम करने के लिए। खाना आने से इससे निकालने के लिए जो अच्छा चीज है हमारा शरीर के लिए और हमारा शरीर को देने के लिए। लेकिन हम इसी टाइम उसको कुछ देते नहीं। कब देते हैं? जब शाम ढल जाता है, रात हो जाता है, तब हम क्या करते हैं, कुछ अच्छा करके नाश्ता लेते हैं। इसके बाद फिर डिनर भी अटेंड करते हैं। कभी कभी ससुराल में सास जी जमाई के लिए जितना बनाते हैं, ये सब खाने के लिए हम डिटॉक्स ड्रिंक लेके या सोडा ड्रिंक लेके एफर्वेसेंट निकाल के प्रिपेयर हो जाते हैं, जितना खाना मिले सब खाने के लिए। ऐसा ही हमारा आजकल का जीवन शैली बन गया है। और रात को एक साथ में बैठ के 9 से 11 के बीच में पूरा परिवार एक साथ में बैठ के डिनर लेते हैं, जबकि सूर्यास्त हो गया है। और तब खाना हमारे शरीर के लिए फायदेमंद नहीं, लाभदायक नहीं। तब हम ज्यादा खाते हैं, जिससे न्यूट्रिएंट हमारा शरीर के अंदर जाता नहीं। ये सब खाली हमारे बारे में बताते नहीं, सारा वर्ल्ड में ये सब चलता है। और हम सोचते हैं इसके जरिए हमारा शरीर को तंदुरुस्त बनाएंगे,
कभी कभी स्टमक जो कंप्लेन देता है, ऐसे ढक्कर आता है, कभी उल्टी आता है, कभी एसिडिटी ज्यादा होने का कारण एसिड भी मुंह के अंदर आ जाता है स्टमक से। ये सब को सप्रेस करने के लिए हम कुछ कुछ दवा लेते हैं, एंटासिड भी लेते हैं, खाने का पहले लेते हैं, खाने का बाद भी एंटासिड लेते हैं। लेकिन कभी सोचते नहीं ये स्टमक का क्या नुकसान हो गया, हमारा खाने में क्या खराब चीज हम डाल दिए जिसके कारण ये सब हो रहा है। इसमें वो इराक और अफगानिस्तान वार के बारे में भी बता रहे हैं। अमेरिका ने इराक और अफगानिस्तान के ऊपर बम्बार्डिंग किया और बम्बार्डिंग करने के बाद इनको सहायता भेजे। अमेरिका जो सहायता भेजी, ये सहायता का जरूरत क्या था? बम्बार्डिंग नहीं करना था, या तो चुपचाप रह जाना चाहिए। सहायता भी भेजते हैं, तो इसीलिए मुस्लिम कंट्रीज इराक अफगानिस्तान जैसा ये सब अमेरिका का एनिमी बन गए हैं। और अमेरिका के ऊपर भी इन लोगों ने जो अटैक किया, ये अटैक के बारे में सबको मालूम है, 6/11 बोलते हैं। तो ये अटैक में कितना नुकसान हुआ ये सबको भी मालूम है। तो इसीलिए ये हमारा राइटर रुजुता जी ये समझाने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि हमारा सेहत के लिए जो जरूरी है, सुबह का टाइम जिसको हम मॉर्निंग न्यूट्रिशन बोलते हैं। आजकल तो हमारा प्रोग्राम चल रहा है मॉर्निंग न्यूट्रिशन का, बहुत अच्छा प्रोग्राम। सुबह ही सब कुछ अच्छा अच्छा चीज देने से, प्रोटीन देना है, मल्टीविटामिन देना है, और अच्छा फैट वसा देना है, ओमेगा 3 जैसा बोलते हैं, ये सब फाइबर देना है। ये सब देने से क्या होगा, ये माइक्रोबायोम का अच्छा केयर होगा और हमारा स्टोमक का भी सही केयर होगा, हजम प्रक्रिया सही होगा, हमारा शरीर को अच्छा न्यूट्रिशन भी मिलेगा और हम तंदुरुस्त रहेंगे। इससे हमारा वजन भी बढ़ने का चांस नहीं, और दिन भर हम कामकाज करने के लिए फिट रहेंगे। रात को तो कुछ लेंगे नहीं, टीवी के सामने बैठेंगे नहीं। शाम ढलते ही, मतलब 6 से 7 के बीच हमारा शुरू कर देंगे डिनर प्रक्रिया, तो हम स्वस्थ रहेंगे। आहिस्ता आहिस्ता हमको सही रास्ता चूज करना है और इसको फॉलो करना है। इससे ही हमारा मंगल है और हम हमारा सेहत